इतिहास केवल अतीत का नहीं होता, हर पुनरावृत्ति इसमें कुछ नई समझ जोड़ती है। कभी कभी राजनीतिक रूप से विकृत पुनर्कथन इतिहास को कुछ दूसरे ही रूप में पेश कर देते हैं। टिप्पू सुल्तान की विरासत एक ऐसा इतिहास है जो सांप्रदायिकता की ओछी राजनीति में उलझा हुआ है। हर राजा, हर शासक की तरह टिप्पू अच्छे और बुरे का मिश्रण था। महान उपलब्धियों और कष्टपूर्ण असफलताओं का एक संयोजन था। निस्संदेह वो एक सक्षम प्रशासक और आधुनिक मैसूर का वास्तुकार था। हालांकि उस समय के सभी राजाओं की तरह टिप्पू भी अधिक धन और क्षेत्र की खोज में था। श्रीरंगपटना के स्थानीय इतिहासकार पेशेवर इतिहासकारों के साथ मिलकर उस विरासत को अदूरदर्शी और चतुराई भरी सांप्रदायिक राजनीति के चंगुल से छुड़ाने के लिए एकजुट हुए हैं। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार जानकी नायर ने बताया, पेशेवर इतिहास लेखन की एक आवश्यक शर्त है साक्ष्य संबंधी औपचारिकता का सम्मान करना। दूसरे शब्दों में, इतिहास प्रमाण मांगता है, अन्यथा वो इतिहास है ही नहीं। टिप्पू को एक क्रूर हिंदू विरोधी राजा के रूप में भाजपा के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी चरित्र चित्रण में इस तरह के साक्ष्य औपचारिकता का पूरी तरह से अभाव है। फिर भी जोरदार तरीके से प्रचार प्रसारित होने के कारण वे समाज के कम से कम एक वर्ग को समझाने में सफल हुए हैं। यहीं पर टिप्पू सुल्तान की तत्कालीन राजधानी श्रीरंगपटना के संबंधित नागरिकों के एक समूह ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने व्यवस्थित रूप से प्राचीन दस्तावेजों, स्मारकों और शिलालेखों में टिप्पू के युग के साक्ष्य की खोज शुरू कर दी। Tipu is perhaps one of the most studied historical figures, and there is almost a cottage industry of writing about him. So it's not like you're going to find out some new revelation about his life that is not already known. There's his economic policies, his military agenda, and his the kind of ways in which he built up Mysore as a modern economy are well known. So these are not things, but I came here because I was interested in the work of local historians who are actually trying to piece together many aspects of the post-Tipu kind of memory of Tipu. That is, say, throughout the 19th century, Srirangapatna became the site on which the British actually commemorated their victories in multiple ways, by talking about the skirmishes which they had won, such as so yesterday we saw a little inscription called Skelly's Post, which is more or less unknown to most people because hidden by construction. We have seen the obelisks that were established throughout the 19th century to commemorate various British victories, and so there are lots of sites, and there are of course also paintings which were done throughout the 19th century to commemorate the British victory. And this carried on, I would say, till about the 1920s. Now, the work of actually piecing together this history on the basis of old maps and on the basis of old paintings has been undertaken by a group of local historians, particularly Harshvardhana and Nidhin Olikara and Chandrana and Dr. Sujay Kumar, as well as a young person who's been organizing these discussions about the new research called Shiva Kumar. मैसूर के 17वीं शताब्दी के शासक टिप्पू सुल्तान को मैसूर के टाइगर और अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और युद्ध के मैदान में 48 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों को टिप्पू के रूप में एक क्रूर विरोधी मिला और उन्हें डर था कि वह फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उन्हें हरा देगा। इसलिए जब उन्होंने अंततः श्रीरंगपटना पर विजय प्राप्त की और टिप्पू को मार डाला, तो उन्होंने कूर्ग क्षेत्र के कोडवाओं जैसे छोटे जागीरदारों के प्रति टिप्पू सुल्तान के शत्रुतापूर्ण कृत्यों को बढ़ा चढ़ाकर और उन्हें सांप्रदायिक
हमलों के रूप में चित्रित करते हुए टीपू सुल्तान के खिलाफ एक तिरस्कारपूर्ण अभियान चलाया। इस प्रकार भारत में दक्षिण पंथियों ने टीपू को एक धार्मिक कट्टरपंथी और हिंदू विरोधी शासक के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि गांधी जी ने टीपू सुल्तान के बारे में कहा था, what the local historians have been doing now and the kind of facts that they've brought out, I mean, including this interpretation of paintings and it has some special significance in the new context where Tipu's legacy is being kind of, being presented in a particular manner by the establishment. And perhaps what you are trying to say, or the local historians are trying to say, is that there has been an attempt to kind of, reinterpret the legacy of Tipu during the British period also, and there is an extension of that now happening. That's correct, yeah. So I think the people I'm talking about are not necessarily combating each and every political kind of, claim that is made regarding Tipu's life and work. Instead, they are hoping that their research and their work on, the multiple languages that were used in his court, the kinds of instructions that he gave his officers, his religious policy, all of these things are actually discussed more fully. So that's the hope, that you have to have a fuller, richer account of Tipu Sultan, which is taking all the complexities, including probably things which are conflictual, not shying away from that. But this group is actually just trying to trace all the material traces in the island of Srirangapatna of that very important period. I have been introduced to Tipu by my father. He was an avid reader. He got all books about Tipu and history of Srirangapatna from Mysore University Library, studied it thoroughly, and after going through all these things, he developed sort of respect for this personality. And if it was respect for Tipu, it was fascination for Hyder. Another incomparable people in world history, I think, as far many parameters are concerned. Because Hyder, an illiterate, could manage the state affairs better than many of our organizations now. And he educated and brought up Tipu to be a gentleman, and he was a thorough gentleman. Put apart many things that a ruler has to do, that these people are doing even now. Being cruel to his enemies and all that. I think that is the way state affairs were run. Then going through, getting information from many people, our fascination has grown now. So nice to get more and more information. Now we are proud to be in Srirangapatna, where Tipu ruled. डॉक्टर सुजय कुमार के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और लगभग 40 वर्ष मृत्यु तक श्रीरंगपटना में आम जनता के डॉक्टर थे। डॉक्टर सुजय कुमार ने खुद एक डॉक्टर के रूप में उस विरासत को आगे बढ़ाया है और पिछले 30 वर्षों से अपने पुराने और देहाती क्लिनिक में श्रीरंगपटना के गरीब लोगों का इलाज किया है। जब भारत की गांधीवादी परंपरा में ऐसी प्रामाणिक जड़ें रखने वाला कोई व्यक्ति टीपू सुल्तान को श्रीरंगपटना में एक आधुनिक राज्य के अग्रदूत और एक कल्याणकारी महान शासक के रूप में देखता है, तो यह एक ऐसा आख्यान है जिसे इतिहास का कोई भी गंभीर पर्यवेक्षक अनदेखा नहीं कर सकता है। And of all rulers, Muslim rulers in India, Tipu is being targeted more. Only a professional historian should analyze and tell you why they are focusing on Tipu more. Is it jealousy? I don't know, because Tipu's achievements in a way are unparalleled.
say, not one thing is Hyder and Tipu, the way they faced British. Next, their welfare measures are very fascinating because their administration, revenue collection, and Tipu was a very knowledgeable ruler. When he got time to read and talk to people, experts and all that, and very precise in arranging things, various departments. Yesterday we got to know about the veterinary department he had from Nidin. They have written, it seems, and all the material is in Calcutta, how their dogs are to be fed, with how much ragi balls, how much ghee for their welfare. Elephants, horses, it's all well written, well documented. टीपू ने मैसूर में जिस आधुनिक प्रशासन प्रणाली की शुरुआत की, वो अपने समय के भारत के किसी भी अन्य राज्य में अद्वितीय थी। He had divided the whole area into what we call as districts now, and he had a police chief and a revenue chief, what we call as a DC or a collector, and then a SP, superintendent of police, each independent of the other. So there is no one single authority in a district. This advanced was his administration, right? And then a time came when his finance minister advised him to remove all prohibition. He had prohibited liquor, ganja, everything. He was advised. His reply was, ruining my people. Should I get money and pay the British? No, I am not going to do it. Rather, I will send my children. उन्हें एक बड़ा झटका तब लगा जब अंग्रेजों ने उनसे एक बड़ी फिरौती की मांग की, या उन्हें अपने 2 बच्चों को ब्रिटिश गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस के साथ बंदियों के रूप में भेजना था। चूंकि टीपू के पास फिरौती देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने बच्चों को ब्रिटिश कैद में भेज दिया। He would lease land to the poor, landless people, not given to them, to cultivate. And as long he cultivates, it is his. If he cannot, it is not his. What we call land reforms today, he had that idea then. Then in one war situation I have read, some reserve troops were coming, and British thought it has to be their, they are coming for their hair because looked so disciplined, they are marching and all that. But actually it was Tipu's reserve. So even his army was very disciplined. He had French army people to say train them. प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा बनाई गई कई पेंटिंग्स हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर टीपू सुल्तान के जीवन और मृत्यु, युद्धों और हार को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के बाद में औपनिवेशिक चित्रण के रूप में आलोचना की गई, जहां ब्रिटिश जीत की महिमा मंडन किया गया और टीपू की बहादुरी को कम करके दर्शाया गया। I myself I do possess a whole series from Hayavadan Rao. I have read Praxi Fernandez and Mahibul Hassan from Kashmir University. So many, and still so much to know, which they have not explored yet. So we interact, and we regularly have some sort of a small seminars about these subjects with experts. See, our own field of knowledge is growing. टीपू सुल्तान की अतीत के शासक के रूप में उसके कृत्यों के आधार पर आदर या निंदा की जा सकती है। हालांकि मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर उसे दोष देना उचित नहीं है। जानकी नायर जैसे पेशेवर इतिहासकारों की मदद से स्थानीय इतिहासकारों का काम किसी को भी जो टीपू और उसके समय को समझना चाहता है, को सच्चाई के बीच से
झूठ की भूसी को अलग करने और खुद समझने का अवसर देगा कि यह शासक वास्तव में कौन था।